हेलो, व्हाट्स अप? कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? Alyssa, I'm very good, but वो so good to see you. सेम है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। पर ये बताओ मुझे, बिकॉज आप इतनी काम कर रही हैं, आपने मलाला यूसुफजई का भी किरदार निभा रहा है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। डिड यू एनीवेयर लूज योर चाइल्डहुड? क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, आपको कहीं लगा यार शायद बच्चों के साथ खेलना, ये करना मेरे से छूट गया कारण क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी? ऑनेस्टली लाइफ में लाइक आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू साउंड मैच्योर बट इट्स माय ओपिनियन। हर एक चीज का बैलेंस होना काफी जरूरी होता है। सो मेरी लाइफ में काम और पर्सनल लाइफ, चाइल्डहुड, इन सब का एक बैलेंस हमेशा से रहा है। लाइक माय पेरेंट्स मेक श्योर कि हर चीज का बैलेंस हो। यस, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कहीं ना कहीं आई मस्ट हैव मिस्ड आउट ऑन माय चाइल्डहुड मेमोरीज। आई अग्री, बट आई ऑलवेज हैड द बैलेंस। तो मुझे रिग्रेट नहीं है कोई चीज छूटने का। हाँ, शायद से आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। तो फिर जो लोगों को पता नहीं है, बट इवन बिफोर स्टार्टिंग विथ टेलीविजन और before I started working also, मैं home schooled थी because I'm a very pampered kid. My parents were very protective about me. उसके पहले से मेरी होम स्कूलिंग चल रही है। तो मैं बहुत नाजुक से पली बड़ी हूँ। तो ओहो। मेरा कोई चाइल्डहुड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मिस आउट किया है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट आई हैव बिकम। लाइक मुझे खुशी होती है दैट एट दिस एज एटलीस्ट आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट अ लॉस्ट टीनेजर एज यू कॉल इट। मतलब मैं शायद से जिंदगी में कोई इतनी स्टूपिड गलती नहीं करूंगी कि कोई मेरा बचपना समझ के उसे नजरअंदाज कर दे, which is a very good and a rare thing. So I don't think so it has caused any harm to me. नो, बट मुझे ये बताओ कि प्रेशर when not having work and getting work, ऐसा सिचुएशन था कि आपको कभी काम नहीं मिल रहा था, आपको फाइट करना पड़ा कोई रोल के लिए, या एक दौरान था जहां काम नहीं था और एंड यू वर गेटिंग इनसिक्योर? I was very insecure and I've been very vocal about this fact कि जब मैंने अशोका किया था, as you mentioned, तो अशोका was a very it did change. I did get a lot of popularity from that show. तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा था that कि क्या now people know me. बट उसके 2 साल तक मैंने ना तो कोई टेलीविजन पे शो किया, I didn't do anything. And I can just simply say that I took a break, I did my studies, but I don't think so I need to lie about my failures because कहीं ना कहीं मैंने दूसरों की failures देख के मैं inspired हुई हूँ to work hard. So अगर मेरे failures देख के कोई inspired होगा मुझे भी अच्छा लगेगा. So after Ashoka, the 2 years gap was not a gap which I took willingly, but it was actually a gap which came to me because मैंने कुछ 10 contracts sign किए थे shows के, big channels and big producers. नथिंग वर्कड आउट। कहीं में मैं रिप्लेस भी हुई हूँ, कहीं में मेरी एज भी फिट नहीं हुई है, कहीं के मॉक शूट्स हो चुके हैं, पायलट्स बन चुके हैं, बट वो स्क्रैप हो चुके हैं। सो यस, आई हैव फेस्ड दैट एंड बिफोर एंड फॉर राप्ता आई रिमेम्बर मैंने कुछ 4 से 5 ऑडिशन दिए थे राप्ता के और मैं शुरुआत के 3 ऑडिशंस में रिजेक्ट हो चुकी थी because I was chubby and I was just not a very fit child. It was quite a journey being rejected 4 times and then इन्होंने किसी और लड़की को सिलेक्ट कर लिया था, like another girl was selected, उसका पायलट शूट हो चुका था, the whole cast was selected and then last moment उस लड़की के साथ कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, so they had to replace her. Then they called me and by that time I knew what was the problem. I lost weight, I started working out and then I think with my 5th audition I got selected. But tell me, Overnight. It was like मैंने दोपहर में ऑडिशन दिया, शाम को मेरा मॉक शूट हुआ और रात के 12 बजे मेरा लुक टेस्ट हुआ and the second day I came back for a look test and the 4th or the 5th day मैं प्रोमो शूट के लिए जा रही थी. It was like that. how was it romancing सहबान अजीम आपके शो पे? इजी था, आसान था, डिफिकल्ट था, नेचुरली आ रहा था? So I've become a very big Besharam of the camera. I'm a big time Besharam because I think camera से आप शर्मा नहीं सकते. Otherwise you are not being true to as an artist. So he's a really good friend and I think because of that it just becomes really easy.
to do such scenes. And even otherwise, if you're an actor and if you know that you have to be true to your craft, तो फिर honestly आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज आती ही नहीं है. So I always knew that I have to be true to my craft, because अगर कैमरे पे दिखेगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल और समथिंग लाइक दैट, तो वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री नहीं बनेगी. बट लकीली बिफोर हम लोग शो की शुरुआत में ही काफी अच्छे दोस्त बन गए थे. सो द केमिस्ट्री दैट वी हैव नाउ इज बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप. एंड इफ दिस फ्रेंडशिप वुडंट हैव बीन देयर, आई एम श्योर जो एक स्पार्क है हम दोनों का वो नहीं होता. बट टेल मी, आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि बहुत से लोगों को लग रहा था कि आप सहबान अजीम को रियल लाइफ में भी डेट कर रही हैं. Yeah. Have you got feedback like that? I have definitely, and surprisingly I've even got this from my close friends. Like सिर्फ fans ही नहीं, but दोस्तों को भी लगता था मेरे ऐसा. But it's just a very given thing कि दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो उन दोनों में कुछ चल रहा होगा. This is what how our society has become. Like I'm being very blunt right now, but this is what everybody, ये सबकी एक mentality हो चुकी है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते. ओके, ये बहुत पुराना डायलॉग है, आई नो दैट, बट आई डोंट रियली फॉलो दिस बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट टू अ सोल, like my show is all about Rapta. If I talk about Rapta, and Rapta defines the relationships that do not have a name. So कई मतलब जो भी मुझसे कोई पूछता है, just say that कि yes, maybe I have some Rapta with him, which I don't know what it is, because every relationship does not require to have a name. That's what I feel like. मेरे कई दोस्त भी हैं ऐसे जो शायद मेरी like Gulfam is a really close friend of mine. She's as old as my mother, but I am still very close to her. Now you can't call us friends because obviously वो मेरी माँ की उम्र जितनी है ना, तो वो मेरी माँ है because वो मेरी माँ नहीं है. So what is she? But she's still very close to me. So what do you call such relationships? You call it a soul connect. So it's as simple as connecting to a soul. तो in short आप पूरा दिल से बोल रही है, सहमान अजीम और मैंने कभी डेट नहीं किया है, रोमांस नहीं किया है, हम लोग सिर्फ बेस्ट फ्रेंड टाइप्स है. बहुत अच्छे. In fact, if someone comes on set, उनको सबको पता चलेगा that he bullies me, he calls me a very weird names, I keep irritating him. We are very good friends, yeah. So yeah. Okay, all right. I trust you on that because you are a very straightforward girl. अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहीं कहा था कि I am supportive of Jannat Zubair क्योंकि उन्होंने refuse किया to kiss on the TV screen. You had said a comment. I support her decision because as a human you have the right to say no to something that you do not want. But I did also mention in that interview that कि अगर कहीं ना कहीं inshallah if God wills and if I get into movies or something like that, I don't think so as an actor I would shy away from such. I also did mention this, that as an actor I don't really think so I would shy away from such scenes, because till the time I know that my family does not have a problem, my parents trust me, my parents are okay with such things, then I would not really bother about anything else or what other people are thinking of me, because मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ और जब तक मेरे माँ बाप को मेरे काम से प्रॉब्लम नहीं है तब तक मुझे कोई और चीज रोक नहीं सकती. I admire this. हर आदमी को वो करना चाहिए जिससे वो खुश हो और जो naturally आता है. Rights कि भाई मुझे नहीं करना ये कि मुझे वो नहीं करना. As a human you have those rights, and as an individual she also has these rights. So yeah, I support her, but yes, if someone asked me for my opinion about such things, then yeah, this is my opinion. Craziest rumor आपके बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल गलत थी पर उड़ती रही, आपने कहा छोड़ दो मुझे, ये क्या है? I think the whole thing about me and Saban having a relationship, because I know that it's somewhere, for the media it is really easy कोई भी चीज को उछालना, but media कभी ये नहीं सोचता है कि किसी की personal life में क्या problems आ सकती है, क्या problems नहीं आ सकती है. I have my grandmother who is almost in her 80s. उनको कोई नहीं समझा सकता कि दादी माँ ये सब एक rumors होते हैं, ये सब मीडिया का काम होता है, ये सब मीडिया ऐसे उछालती है. I can't go and explain this to an 80-year-old. Gets really difficult.
ऐसी खबर अगर एक बार उछले इट इज एक्सेप्टेबल, पर ऐसी खबर अगर हर बार उछलती रहे देन इट स्टार्ट्स इरिटेटिंग यू, एंड देन you somewhere stop taking them seriously. Or when you stop taking them seriously, you stop, you know, saying anything about it, you stop commenting about it. And if you don't comment anything, people think that yes, that means she really has something going wrong. But people don't understand कि एक इंसान अपने आप को शायद से एक ही बार एक्सप्लेन कर सकता है, 100 दफा एक्सप्लेन नहीं करेगा कोई इंसान. So ये रूमर मैंने अपने बारे में बहुत सुना है. Now is the time when I have given up. You know, my family has given up कि भाई okay, इसका कोई, there is no closure to this, the media is never gonna stop, so I think let's just put a full stop. But इसमें भी गलत क्या हो जाता है, आप full stop लगा देंगे, आप कोई comment नहीं करेंगे, so people start assuming कि if she's not commenting something, then that means there's something really going on. So you know that thing gets very irritating और फिर कहीं ना कहीं आपको bother करने लग जाता है. You know, you don't understand कि मैं इस चीज पे कमेंट करूं या इस चीज पे कमेंट नहीं करूं, because you just never know कि आपकी कौन से एक कमेंट की वजह से आपकी पूरी इमेज बदल सकती है. अच्छा, आप मुझे बताओ कि पहले आपने कुछ समय पहले कहा था राब्ता मैं क्विट कर रही हूँ, फिर 2 दिन बाद था कि आप राब्ता कर रही थी वापस. What was going on? क्या हो रहा था उस वक्त? So as we all know that Rabta would be completing 2 years on 3rd September. So the thing is that काफी creative differences हो गए थे. There were some things which I wasn't comfortable with. I'm working with these people for 2 years now. It's gonna be our 3rd year, beginning of our 3rd year. You know, तो कहीं ना कहीं जो आपके अपने होते हैं ना, उनसे बना के रखने के लिए आप कई चीजें लेट गो करते हैं. बट यू नो, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि ये चीजें मैं लेट गो नहीं कर सकती, बट एट द सेम टाइम मैं इस इंसान के साथ खराब नहीं करना चाहती, सो यू सिंपली जस्ट टेक अ स्टेप बैक. दैट्स व्हाट आई डिड. मुझे राब्ता के साथ कुछ खराब नहीं करना था, ना तो मुझे जी के साथ कुछ खराब करना था, ना तो मुझे अपनी प्रोडक्शन के साथ यू नो अपने रिश्ते खराब करने थे. इज द रीजन आई थॉट दैट यू नो रादर देन फाइटिंग and you know changing all the creative differences that I have, and you know doing all this would just get very ugly. So it's just that I simply take a step back to avoid all those things, because as an actor मैं कोई नहीं होती हूँ जाकर राइटर्स को बोलने वाले कि दिस इज, आप ये चेंज कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो. So as an actor I'm not comfortable to do that. I will simply take a step back that I'm sorry, I can't do this, please don't force this on me. But the channel and the production were, you know, didn't want me to go. Is the reason that you know हम सबने बैठकर एक we found a middle way to it. जो कुछ चीजें जो मुझे नहीं करनी थी वो चैनल और प्रोडक्शन ने मुझे जेन्युइनली हेल्प की कि ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं करना चाहती तो ऐसा नहीं होगा. कुछ चीजें हमने भी सोचा कि ओके मे वी कैन लेट गो ऑफ दिस. सो या दैट्स द रीजन दैट कि हाँ, खबर एज आई सेड, एक खबर फैलने में वक्त नहीं जाता. तो अगर जो खबर थी अबाउट मी क्विटिंग द शो, अगर जब सेट पे बातें हुई, अगर सेट से बाहर नहीं जाती तो शायद ये खबर कभी आती ही नहीं. सो इट दैट, हाँ, आई वाज आल्सो वेरी सैड कि एक फाइनल कोई मीटिंग हुई नहीं है तो ये खबर बाहर क्यों गई. तो एनीवेज अगर देखा जाए बाबा, आप आज टेलीविजन पर है, मेरा क्रिस्टल बॉल कहता है एक दिन आप फिल्मों में भी आएंगी. You got to get used to this, Baba. You got to get used to this. You got substance, lady. You got substance, and I know it. कि आपके friends हैं, करीबी दोस्त हैं Indian entertainment business में? Yeah, actually, I'm a very choosy person when it comes to you know having people around me. So yes, but I do really have some really good friends. Aditi Sharma, who's doing Jadoo Hai Jinka, is a very very dear friend of mine, and you know मुझे वो दोस्ती अच्छी लगती है जहाँ पे कोई चीजें फोर्सफुली नहीं होती. So you know, we have a very good understanding about it, and we have a really good balance. As I always look for balance in everything, be it work, be it relationships, or anything. So we have a balance of both. I think is the reason that yeah, we really bond. रीम, क्या उनको कभी हार्ट ब्रेक हुआ है कि नहीं? Honestly, yeah. I think I don't like to lie about my feelings or anything that I faced in life. हुए हैं काफी अलग अलग चीजों को लेके. As I said that I can be really really emotional
I can be really emotional. Recently, it was very heartbreaking for me to even जब मुझे लग रहा था कि मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी, so I was genuinely heartbroken. And apart from that, I think जिंदगी है, हर emotion आपको कहीं ना कहीं feel करना ही पड़ेगा, and life just makes you strong if you know be stable and know the if you have patience, you'll just become stronger every day, and I think I am becoming stronger every day when whichever emotion I face. Okay, what comes to your mind? भले ही आपने इनके साथ काम किया हो, नहीं किया हो, बताइए. It's not a one word. Just tell me what comes to your mind. जब मैं कहता हूँ जन्नत जुबैर. Janu, I used to call her Janu. We know each other since almost 10 years now. So Why yeah. did you used to call her? Why not now? You can call her Janu even now. I still call her Janu, but yeah, if you think, then I started calling her Janu because Jannat and Janu, we are friends since years now, 10 years of friendship. Wow, आपके और उनके bond में क्या खासियत है? What makes your bond with Jannat इतना special? I think it's she's also somewhere a simple person. I don't really see her, and I know that she doesn't like socializing a lot, whereas I'm also like that. So कहीं ना कहीं हमारे हमें बहुत सारी similarities हैं. हम दोनों की फ्रेंडशिप भी ऐसे ही शुरू हुई थी. हमने एक दो बार एक दूसरे को मिले, but we both were such reserved people that no one made a move for any kind of friendship. And then once we did one Airtel ad together, and ever since then we've been great friends. Avneet Kaur. Fashion diva? Siddharth Shukla. No comments. I don't know. I've heard so much about Big Boss. It's just that I didn't have the time to watch Big Boss, so I just don't know how he is. But whatever I've heard, I think no comments would keep me safe. Oh, okay, all right. Siddharth Nigam. He's very dedicated. I have done Ashoka with him. We have like हम सब करजत में रहते थे, so you can just say that कि yeah, we've all lived together as a family. And I really wish कि जितना dedicated वो है, I'm not saying I'm not a dedicated person, but कहीं ना कहीं उसमें जो dedication है, उसमें जो discipline है, I admire that, and I really एक ही advice अगर मैं उनको दूंगी is that never lose your dedication, because he's a really nice person. He's a really nice person. वो जितने सिंपल दिखते हैं वो उतने ही सिंपल है भी. बहुत रिस्पेक्टफुल है, एंड एज यू सेड दैट कि आजकल के आप अगर बच्चे देखेंगे थोड़ा सा फेम मिल जाता है तो वो इधर चढ़ जाता है, उनमें नहीं चढ़ा है. whereas I openly admit that कि जिंदगी में वो हम सब से बहुत आगे पहुंच चुके हैं, because he's worked really hard, but आज तक उन्होंने ऐसा कभी शो नहीं किया किसी के भी साथ. Siddharth Nigam, Sehbaan Azim, your better co-actor. Sehbaan Azim. Okay, and why? I think because we've worked over 2 years now, so I know him better, and Ashoka was just there for 5 months. So कहीं ना कहीं मैं इन्हें ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ. And about Sehbaan, he's a better friend because as I said, it was a very organic friendship. It was a very natural friendship, and हम दोनों के जो scenes निकल के आते हैं, as co-actors we know each other so well that अगर वो scene में कुछ add कर देते हैं on the spot, I know how to pick it up and take it forward and add something more to it, which makes the scene interesting and the vibe on set very interesting. Jennifer Winget. She's hot. I admire her. She's my girl crush. Oh, kya baat hai. Hina Khan. Fitness icon. Wow. Have you any point of time gone through mental depression because things were tough, and how did you bounce back? Tell us about that. See, it is something that I have no knowledge about, so I don't know how to say this, but I know I've seen people going through it. It's very heartbreaking to have someone around who's always chirpy and smiling, but deep down you don't know what's going inside a person's mind. जो मैं कहीं ना कहीं बहुत बिलीव करती हूँ कि हर इंसान जो हंसता खेलता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो, because some people just don't like to show their true side to the world. I've always believed that कि कहीं ना कहीं मुझे as a human अपने आप से इतनी अच्छी दोस्ती करनी है कि मुझे कभी भी इतना पागलपन फील ना हो
मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ. And for mental peace, like I'm no champion. I know nothing about this. But just one thing that I do for myself to keep myself calm and at peace, I write a diary. I write a diary, and जो चीजें हैं जो मैं शायद किसी को नहीं बोल सकती कभी भी, I write it down. And one thing, हमेशा लिखते वक्त कोई चीज अगर मैं कंफ्यूज भी होती हूँ ना लेके, मुझे लिखते वक्त वो चीज का सोल्यूशन मिल जाता है, या फिर उस चीज का एवरीथिंग हैज टू साइड्स, वो चीज का दूसरा साइड दिख जाता है. सो इट जस्ट मेक्स इट वेरी इजी एंड क्लियर फॉर मी. So I am no expert in when it a topic about mental health, but if you ask me what I do to keep myself at ease, this is what I do. Is Reem इस वक्त in a relationship or not? No. How come इतना pretty, sensible, sorted girl इस वक्त single है? टाइम नहीं मिलता, या फिर कहती है यार बॉयज हटो भगाओ उनको, क्या है? I wouldn't lie about this, but it's just that I know how this generation works, like my generation works. So kahin na kahin, all the puppy love and everything. I have seen my friends also. Of course, I have friends my age. I've seen them going through such things, and I don't think so. At this age, I need all this tension in life. I don't think so. I am more focused on my career, and yes, I've had a lot of workload and a lot of work tension. Or maybe as humans, we always try to prove something to other people that, look, I am so cool. I am in a relationship. Look, I'm so cool. I smoke. I do this. I do that. No, मैं जिंदगी में कुछ भी करूँगी. I will do it for myself, for my happiness, not to look cool in front of the world. So अगर मुझे कोई लड़का अच्छा लगेगा, अगर कोई मुझे जेन्युइनली लगेगा, ऐसा तो नहीं कि मैं पहला लड़का जो पसंद करूंगी ऐसा होगा कि भाई मैं इसी से शादी करने वाली, ऐसा नहीं होने वाला. बाबा, you got a long way. आप बहुत young है. But it's just that I don't want to do anything just because the whole world is doing it. Like all my friends are in a relationship, I am not. So maybe I should really have someone जिसके बारे में मैं भी बात कर सकूं. No, I don't want it just for that. If I genuinely like someone, then I am sure that things would work out. But at this moment, just to prove something to someone, or just to be a part of that whole group, that let's go on double dates, let's go on a जो ग्रुप बना के जाते कि तू अपना बॉयफ्रेंड लेके आना, मैं अपना बॉयफ्रेंड लेके आऊंगी, just for all those things, I don't want to date someone or just be with someone just to show or to show off. Even if I've been in a relationship, I think it's gonna be so low key that किसी को नहीं पता चलने देना चलेगा, because I don't think so. आपकी personal life और आपकी professional life में फर्क होना चाहिए, because as my Instagram bio says, I love staying a mystery. So I think my personal life should be a mystery, ताकि लोगों को interest बना रहे. If I become an open book to everybody, then people will not be interested to know anything about me. But don't you feel कि social media ने सबको खुली किताब बना दिया है? क्या आप social media pressure face करती है? क्या आपको किसी को body shaming होता है, किसी को गालियां पड़ती है? ये सब आपने face किया है कि नहीं? There is another thing that I've written in my bio, that I don't let social media control me. I control my social media. I think it just says it all. Balance, as I said, balance about everything. So I have a balance through my social media as well. मुझे पता है कि मेरी personal life किस हद तक आनी चाहिए social media तक और किस हद तक नहीं आनी चाहिए. And I keep a balance. So जाने से पहले, yes. hottest TV actor कौन है आपके अनुसार? Male. Okay, so since I've just been very blunt throughout this whole life, I really admire Aditi's co-actor Vikram. I am sorry, I don't know his full name, but I think he's a really good actor, and also he is very classy. So yeah, if we talk about the most attractive male that I find on television, I think it would be him. पर क्या कौन से सीरियल में आते हैं वो? जादू है जिनका, my friend's show, Aditi Sharma, उसके co-actor. Oh, okay. Or let me just give you name. Mohsin Khan, Par Samthan, Shahir Sheikh, Asim Riaz. Mohsin Khan. And why? What elements appeal to you about him?
It's just that I've met him personally. I've met him quite a few times now, and he is a true gentleman. Like he just knows how to behave. He knows how to, be respectful towards a woman, which is something, which is the first thing that I look for in a guy. That how chivalrous he is, and he's a true gentleman. So yeah, that is very attractive about guys. तो जितने भी लोग हैं आपने समझ लिया है कि क्या पसंद है रीम को. Thank you so much. It was lovely talking to you. I'm really happy that it was a very different live. मुझे ऐसा लग रहा था, टिपिकल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपका क्वारंटाइन कैसा गया, आपका लॉकडाउन कैसा गया टाइप्स, and I was like, I'm not prepared for that. But it was really lovely talking to you, and I guess आज जाके मैं कुछ बोल पाई हूँ. Otherwise, usually people just ask me questions about, to the typical this generation questions. But it was really lovely talking to you. Thank you, Reem. See you on the other side soon. Bye. Bye bye. See ya.